So very good afternoon to all of you. I extend my sincere and hearty welcome to the 26th session of the professional training, pre-examination training for limited departmental audit and accounts examination in ICAR. The today session will be conducted by one of the expert in ICAR system. He is one of the strong pillar in ICAR finance. Shri Saurav Muni, Deputy Director of Finance, ICAR headquarters, and the session is on compilation of monthly accounts. So he will be discussing on monthly accounting, touching to annual accounting also, and he will try to make the session as simple as possible, so that as you can understand, so many people are from non-commerce background. So I welcome to the resource person Shri Saurav Muniji to the 26th session of the pre-examination training for limited departmental audit and account examination. So now it is over to you. You may conduct your session. You can share your screen and conduct your session. Thank you, Das sir. Yeah. So hello friends, आप सभी का फिर से एक बार आज स्वागत है। जो दास साहब ने बहुत ही एक नोबल एफर्ट कॉस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा अरेंज किया है। आई होप कि भी आप सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से सारे आप बेनिफिट्स डिराइव कर रहे होंगे। So coming over to today's session, as Das sir has already told that today's session is on monthly accounts. So monthly account, let me tell you very frankly, monthly account के बारे में audit manual बहुत ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है. There are hardly 2 to 3 passing references regarding monthly account. So and nowadays many of the institute may not be in preparing the monthly account itself. But अभी हम लोग इस monthly account में देखेंगे कि this monthly account is very useful in preparation of the annual accounts, the books of जो हम लोग 31st March को when we close our books and the different say our receipt and payment account, Annexure G, and the other say schedules of the annual account which we prepare, monthly account helps very much in that and it forms a base for that. So आज की जो presentation है, there are hardly 10 to 11 slides in that presentation. I will try to make it more say practical oriented so that because the topic itself is very much practical oriented and how the figures move from one head to other, how the figure moves from monthly account to Annexure G or say receipt and payment account. I hope आप सभी ने जो those who are attending this training program, they must be familiar with the certain terms which I am using, say Annexure G, receipt and payment account. In case if someone is not familiar with those say terms, they may please raise their hand so that I will make a brief say I will try to explain them in brief about those say schedules or annexures also. So the now coming over to the monthly, Rahul ji he has raised his hand. So Rahul ji, you can in chat box you can put the say, schedules and annexure. Don't know. Okay. See, when we prepare our account, I'm talking about the annual account. There are certain papers which are attached to our balance sheet and an income and expenditure account. These papers, how the figure has been arrived, different figures has been arrived in balance sheet and income and expenditure account. These schedules explains those figures. So there are different schedules. Say corpus fund, capital fund का एक schedule होता है. Then there is a schedule for current liabilities. Then there is a schedule for current assets. Then there is a schedule for fixed assets. And then अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग schedules होता है. जो हमारी income और जो हमारे expenses होते हैं, we carry them to different schedules, and then from those schedules these figures
flows to our income and expenditure and balance sheet. Now coming over to back to our presentation, तो मंथली अकाउंट, इसका मैंने 2-3 पॉइंट्स में इसको कवर करने की कोशिश की है. द फर्स्ट वन इज कंसेप्ट, क्या इसका, व्हाट इज मंथली अकाउंट, देन इट्स यूटिलिटी, एंड द थर्ड वन इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. So monthly account, देखिए monthly account, what is monthly account? It's a receipt and payment account. Basically in a very layman terms, I will say it's a receipt and payment account. What does receipt and payment account does? It records all your receipts and all your payments which you receive or you incur your expenses during the month. It has an opening balance column, for dedicated column for opening balance. Then there are certain heads for receipts also, that I will discuss in detail. So receipts में different heads होते हैं, like say government grants, then other receipts, then in IRGS, then internal revenue generated at source. IRGS stands for internal revenue generated at source. Then there is a head for U remittance. Then there is a head for funded debts, which is GPF. Then there is a head for funded schemes or deposit schemes. इस तरीके से अलग अलग हेड्स होते हैं रिसीट कॉलम में भी. एंड देयर इज ए सेपरेट कॉलम्स फॉर पेमेंट आल्सो. तो अगर एक किसी ने पुराना अकाउंट का फॉर्मेट देखा होगा, स्टैंडर्ड डेबिट क्रेडिट की तरह दो साइड्स होते हैं, इसके दो साइड्स होते हैं. वन साइड इज रिसीट, लेफ्ट हैंड साइड इज रिसीट, राइट हैंड साइड इज पेमेंट. तो रिसीट साइड में सारी रिसीट ड्यूरिंग द मंथ की हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड पेमेंट में हम लोग ड्यूरिंग द मंथ के पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं. लाइकवाइज व्हाट वी, एक कैश बुक होती है, कैश बुक का ही एक छोटा फॉर्म है जिसमें कैश बुक की सारी एंट्रीज को हम लोग रेलिवेंट हेड्स में कंसोलिडेट करके प्रेजेंट करते हैं. नाउ व्हाट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस. एज द नेम सजेस्ट मंथली अकाउंट, तो ये मंथ में ही बनता है. पीपीटी इज विजिबल और नॉट? तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर, आपका स्क्रीन शेयर थोड़ा कर दीजिए. मुझे तो स्क्रीन शेयर आ रहा है. आ रहा है, लेकिन आपका ये आ रहा है, पीपीटी नहीं आ रहा है, ओनली फाइल दिख रही है. हाँ फाइल दिख रहा है सर आपका. अच्छा, हाँ या अभी है, अभी विजिबल है? हाँ या अभी विजिबल है. ओके, सॉरी. तो मंथली अकाउंट एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, जैसे अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया. देन इट्स प्रिपेयर्ड ऑन द मंथली बेसिस, जैसे वो नेम सजेस्ट कर रहा है, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस. देन व्हाट डज इट डज? इट डिपिक्ट्स द रिसीट्स as well as payment made during the month. Whatever amount has been received, remittances received, they are shown in under the receipt column of the monthly account, and the payments in made, or the say the payment made to different vendors, staff, or say under different schemes, इसको भी हम लोग पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं. एंड अभी जैसे मैंने आप लोग को समझाया, जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा था, उसी समय जैसे मैंने बताया आपको, receipt and payment both are grouped under different subheads based on their functional basis. Suppose grant की कोई पेमेंट हो रही है, अंडर ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट में कोई पेमेंट हो रही है, तो that will be grouped under government grant. If some payments have been incurred under say deposit schemes, our deposit जो हमारे जो externally aided project जिसको हम लोग बोलते हैं, if the expenditure is made under externally aided projects, then those are grouped under funded debt schemes. तो इस तरीके से we say group all the receipts and payments under different subheads. Then अभी मैंने मंथली अकाउंट का फॉर्मेट जो पुराना था, आई होप अगेन ये विजिबल होगा आप सबको. देखिए पुराना एक फॉर्मेट है मंथली अकाउंट का, रिसीट एंड पेमेंट का. तो अंडर रिसीट साइड देयर इज अ ओपनिंग बैलेंस which includes cash in hand, cash at bank, short term deposits, saving bank account, cash in transit. ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं ड्यूरिंग द मंथ. एंड प्रोग्रेसिव, ये दोनों सेम फिगर्स होती हैं ड्यूरिंग द मंथ, एंड प्रोग्रेसिव फिगर्स, ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा सेम रहती है. देन
the government grant. Suppose in the month of April, you have received 5 lakhs as under government grant. So during the month, you will put a figure as 5 lakh, and under progressive, it will be 5 lakhs. Again, say in the month of May, you have received another 10 lakhs. वैसे quarterly release होता है. Suppose in the first quarter, you have received 5 lakh, and the next quarter, you have received 10 lakhs. तो जब जुलाई मंथ का बनाएंगे monthly account, then under government grant, during the month, you will show the figure as 10 lakhs. But under progressive, it will be 15. How come 15? 10 for this month plus 5 for the month of April. So progressive figure will be 15. Similarly, up your other receipts. Other receipts, what are other receipts? During the course of agricultural research, there are certain, say, कुछ farm produce हो रहा है, some based on the nature of institute. अगर आपका इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर में है तो सम से फ्रूट क्रॉप्स विल बी देयर. अगर एनिमल साइंस में है तो कुछ मे बी फिशरीज में तो फिश रह सकता है या मीट. स्लाइड नहीं दिख रहे वो भी. ओके. So this was as old format of monthly account which I have shared with all of you. So there are certain heads for opening balances, cash in hand, cash at bank, short term deposits, government grant, other receipts. Other receipts में क्या है जो आपकी आपका इंस्टीट्यूट जिस भी चीज में डील कर रहा है, जिस भी एग्रीकल्चर ट्रेड में डील कर रहा है, तो उसमें कुछ अगर एग्रीकल्चर फिशरीज का है तो वहाँ पे सेल ऑफ फिश हो सकता है. इन केस इफ इट इज डील विद से क्रॉप साइंस का है तो देयर में बी सेल ऑफ सीड, एग्रीकल्चर सीड्स. तो दो सीड जो रिसीट्स होती है एनुअल अकाउंट में जो एनेक्शर ए में जाती है, दैट विल बी कवर्ड अंडर अदर रिसीट्स. देन जो कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, ये चीजों का जो पैसा मिलता है, रेवेन्यू आता है, that are grouped under IRGS, internal revenue generated at source. Then the revenue generated under revolving fund, it is classified under revolving fund head during the month. Then the funded debt is ये डिटेल में आगे मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा हर एक चीज को. फंडेड डेट इज GPF. इसी तरीके से लोन्स एंड एडवांसेस एंड ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल फॉर रिसीट. एंड similarly for the payment side also, different heads are there. The payment made under government grant, the payment made under the schemes, से plan schemes में जो expenditures करते हैं वो government schemes में आता है. Then that's earlier there was a scheme under AP called as APSS scheme. तो अब तो ये जनरली नहीं होती है most of the institute में, तो APSS जनरली 0 रहेगा. रिवॉल्विंग फंड में अगर किसी का कोई खर्चा है तो रिवॉल्विंग फंड का आएगा. Then again likewise what we had in receipt, that funded debt, funded schemes, ये एक डिटेल्स आएंगी. Then in the end there will be a say closing balance. Closing balance जो है बैलेंसिंग फिगर. क्लोजिंग बैलेंसेस की फिगर्स विल बी बैलेंसिंग फिगर बिकॉज आपका टोटल साइड, दोनों साइड, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड शुड मैच. अगर दोनों रिसीट एंड पेमेंट साइड मैच हो रहा है तो आपका मंथली अकाउंट फॉर द मंथ आपका कंप्लीट है, पूरा है. कमिंग बैक टू दैट प्रेजेंटेशन, मैंने हाइपरलिंक किया था बट आई एम अनेबल टू तो नाउ again अब बेसिक मंथली अकाउंट का फॉर्मेट यू पीपल हैव सीन. So based on your the basic understanding, now we can see एक present एक definition part monthly account के लोग बोल सकते हैं. Exactly definition we cannot call it as a definition. Based on my knowledge, मैंने उसको summarize करने की कोशिश की है. That monthly account is a statement indicating the sources and application of funds made by the institute during the preceding month. It is prepared for the say जब आप अभी currently अगस्त चल रहा है तो in August you will prepare the monthly account for the July. तो क्या होता है? It's a statement, basically statement है. What does it indicates? It indicates sources and application of funds. Sources कहाँ से पैसा आया and कहाँ पे पैसा अप्लाई हुआ. So it's a statement which indicates
the sources and application of funds. Funds here are strictly cash, जो कि cash transactions होती है. We will come later on that cash and non-cash transactions and cash and accrual transactions. But अभी आपने ये समझना है whatever entries you are making in your cash book will definitely have an impact on its monthly account. फिर उसके बाद sources and application of funds. जो sources is receipts and application is payment. Sources and application of funds are classified under different subheads. What are those subheads? Say government schemes, grant, other receipts, IRGS, EU remittances, and likewise. Now it is prepared on cash basis. What does that mean? See, there are two types of transactions: cash transaction, non-cash transaction. कुछ ऐसी transaction जैसे जो अभी those who are posted in audit section, they must be aware that on 31st March we make some say transaction like say the interest transactions and other transactions which to bring our account, yeah, to make our account as per the accrual basis. तो जो कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस में रियल कैश का फ्लो होता है, एक्रूअल एंट्रीज में कैश प्लस नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, साथ में कुछ एक्रूअल एंट्रीज जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या नॉन कैश ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन, तो इन एंट्रीज का भी उसमें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. तो मंथली अकाउंट इज स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस. देन जैसे अभी you people have seen that it depicts monthly as well as cumulative progressive balances also. The expenditure made or the remittances received under different heads. Under different heads, so it depicts those balances on monthly as well as progressive basis. Now, coming to the receipt side of monthly account. अभी आप लोगों ने सबने देखा कि एक मंथली अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, तो इसमें रिसीट साइड पे हम आ जाते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड इज रिसीट साइड. तो एक एक हेड को हम लोग समझते हैं क्या होता है. तो फर्स्ट वन इज ओपनिंग बैलेंसेस. तो ओपनिंग बैलेंसेस इज द कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश इन ट्रांजिट. ये जो पैसे आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं, दैट यू, एक मिनट, हाँ, sorry. So the first head under receipt side is opening balances. The opening balances में क्या क्या सब हेड्स होते हैं? कैश इन हैंड, the one which DDO has in his chest box. तो कैश इन हैंड होता है. देन देयर इज अ कैश एट बैंक, जो कि आपके बैंक बैलेंस है जो जिसको आप अपने एनुअल अकाउंट के शेड्यूल 7 में डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं. देन देयर इज अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स. सपोज इफ यू हैव apart some fund under short term deposit as fixed deposits, तो उस फंड को हम लोग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हेड में ओपनिंग बैलेंसेस में दिखाएंगे. देन देयर इज अ हेड कॉल्ड कैश इन ट्रांजिट. ये कैश इन ट्रांजिट इज आल्सो वेरी रेयरली यूज्ड, बट सपोज nowadays generally doesn't happen, but suppose there is a case of foreign remittance and institute foreign remittance के केस में हेडक्वार्टर में आता है पहले पैसा, बट एक hypothetical case we assume that some amount is being remitted by some foreign based organization to a particular institute based at say Mumbai.
उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, बट अभी आपके पास आया नहीं है, बट यू हैव रिसीव्ड सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट दैट अमाउंट हैज ऑलरेडी फ्लोन से हैज बीन रेमिटेड बाय देम, वायर ट्रांसफर कर दिया गया है, या तो उसको आप कैश इन ट्रांजिट दिखाते हो। बट जनरली आजकल जो एनईएफटी, आरटीजीएस और ये सारी चीजें जो इतनी इंस्टेंट होती हैं, दैट कैश इन ट्रांजिट appears very rarely in say book. Even in case of branch account, या जहाँ ब्रांच अकाउंटिंग का कंसेप्ट होता है, तो वहाँ ब्रांच ने कुछ पैसा फिजिकल कैश को रेमिट किया है टू से हेड ऑफिस और टू सम अदर ब्रांच, वहां पे भी कैश इन ट्रांजिट का कंसेप्ट आ जाता है। देन द सेकेंड हेड वाज गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट में व्हाट वी शो the receipts, different receipt made by ICAR headquarters under say scheme budget as well as non-scheme budget, that we show under government grant. That is the receipt side of the monthly account, and it includes remittances received under government schemes. ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट ग्रांट की मतलब आपकी जो यूनिफाइड बजट है उसको ही शो करना है। It includes other schemes which we depicts under Schedule 9A of the Annexure C of the annual account. Then आता है other receipts. Other receipts में मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो मैंने हाइपरलिंक बनाए हैं। आई थिंक हाइपरलिंक इस तरीके से तो हो नहीं रहा है। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट अलग अलग, जैसे ये एक जो टेलर किसी किसी इंस्टीट्यूट में टेलर यूज हो रहा होगा वहां का एक ये डाटा है बजट सेक्शन से। बजट सेक्शन इज द सेक्शन फ्रॉम दैट इज हाईसेर हेडक्वार्टर। पैसा आया है जनरली, पुराना सिस्टम है तो आरटीजीएस दिख रहा है, बट इट कैन बी टीएसए आल्सो। व्हाट इज द अमाउंट किस कैश बुक में लिया वो ये है। देन नाउ कमिंग ओवर टू द रिसीट पार्ट। तो रिसीट पार्ट में जैसे ये रिसीट्स है आपकी, फार्म प्रोड्यूस से कितना पैसा आया, फिश एंड पोल्ट्री, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, लाइसेंस फी, जो लाइसेंस फी रिकवर होती है, these are the different heads under receipt. तो पीपीटी इज नॉट विजिबल ना? हाँ पीपीटी अभी वो किया। अच्छा ओके ओके। एक्चुअली वो मैंने दास साहब हाइपरलिंक किए थे, बट हाइपरलिंक में कुछ इशू आ रहा है, तो ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, अदर रिसीट्स हो गया। नो IRGS, IRGS is what the internal revenue generated at source under contract research consultancy research का जो प्रोजेक्ट में revenue generate होता है, that we classify under IRGS. Then there is a head for revolving fund. जो revolving fund में receipts generate होती है and say if the revolving fund pertains to mega seed production, तो उसमें seed की sale होगी, तो उससे जो receipt होगी that will be classified as revolving fund receipt. Then funded debts. Funded debts क्या होता है? Is GPF, जो कि GPF का पैसा we recover from the salary head. Whatever salary amount is recovered from the salary head of the say जो old pension में covered है उनके salary से recover कर रहे हैं, that are classified under funded debts. Then funded schemes. What are the funded schemes? Funded schemes जैसे कि जो R deposit schemes होती है, somewhere it is called as R deposit, somewhere it is called as externally aided projects. तो जो non ICR funded schemes हैं, say the schemes funded by DBT, DST, or say some other government agencies or private agencies like say companies like Tata or maybe some other agency, वो सारे funded schemes होती हैं, उनको हम लोग फंडेड स्कीम्स भी बोलते हैं, आर डिपॉजिट स्कीम्स भी बोलते हैं, या उनको हम लोग एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। तो वॉट एवर रिसीव्स अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर दोज स्कीम्स आर क्लासिफाइड अंडर फंडेड स्कीम्स। देन लोन्स एंड एडवांसेस. Suppose an employee has taken a loan of computer loan and of 50,000, and then he has agreed for getting it say repaid in 2,000 equal installment for 25 months. तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 25 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स
ऑफ रुपीज 2000. तो जो 2000 रुपीज उसकी फर्स्ट मंथ की रिकवरी होगी, जब रिकवरी होगी देन दैट रिकवरी ऑफ 2000 विल बी शोन एज रिसीव अमाउंट रिसीव्ड अंडर. यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट नहीं किया तो लाइट बंद हो जाती है हेडक्वार्टर में, सॉरी फॉर दैट. तो फंडेड डेट्स कहाँ थे हम लोग? हाँ, लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स एंड एडवांसेस में फिर जो सैलरी से रिकवरी हो रही है वो आ जाएगा. नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, अर्लियर देयर वाज सम फेस्टिवल एडवांसेस का कंसेप्ट था. नाउ फेस्टिवल एडवांसेस तो सारे एडवांसेस बंद हो गए. देयर आर ओनली टू एडवांसेस, वन इज कंप्यूटर एडवांस, अदर वन इज होम लोन. तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस 99% तो डिफंक्ट है आज की डेट में, कुछ है नहीं. बट सपोज ड्यूरिंग द कोविड पीरियड गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी वेर इन दैट एलटीसी कैश स्कीम थी, तो उसका पैसा हम लोग नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस में डाल सकते. देन यू रेमिटेंस. व्हाट आर यू रेमिटेंस? सपोज सम रिकवरी हैज बीन टेकन फ्रॉम हैज बीन मेड like say TDS on GST or maybe NPS or say some any of the recoveries made by from some salary bill or say from vendors, and if that has to be remitted to some other department or some other agency, then that those entries are grouped under you remittance. तो जैसे किसी का TDS कटा है, किसी का TDS on GST है, या और सपोज NPS का हमारा न्यू पेंशन वाले में जो NPS कटता है, those are grouped under you remittance. Whatever recoveries are made under say NPS or like that, अभी जो मैंने आपको बताया, वो उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं you remittance. Then remittances other than grants. Suppose the council has remitted you funds under IRG, जो council share of revenue, तो वो remittances other than grants हो जाएगा. Then last है other miscellaneous receipt. तो जो अमाउंट इन ऊपर की 11 एंट्रीज में 10 एंट्रीज में नहीं क्लासिफाई हो रहा है, अदर देन ओपनिंग बैलेंस 10 एंट्रीज बच रही है, नहीं क्लासिफाई हो रहा है. जनरली क्लासिफाई आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं ग्रुप हो जाएगा. अगर नहीं ग्रुप हो रहा है तो उनको हम लोग अदर मिसलेनियस रिसीट्स में लेंगे. नाउ कमिंग ओवर टू द पेमेंट साइड ऑफ द मंथली अकाउंट. सबसे पहला हेड होता है गवर्नमेंट ग्रांट. तो जो भी एक्सपेंसेस हम लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट से किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर गवर्नमेंट ग्रांट, से कैपिटल एक्सपेंडिचर और सैलरी एक्सपेंसेस और से जनरल कंटीजेंसी एक्सपेंसेस, व्हाटएवर एक्सपेंसेस वी इनकर, दोज आर क्लासिफाइड अंडर गवर्नमेंट ग्रांट. देन अगर इसका हम लोग देखना चाहें, अगर सेकंड, अभी मैं कुछ बताता हूँ फिर इकट्ठे देख लेंगे. देन सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम्स. जो प्लान स्कीम्स हैं उनका एक्सपेंस, उनका पेमेंट हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स में क्लब करते हैं. सारे एक्सपेंडिचर जो सपोज AICRPs का या किसी और प्लान स्कीम्स का, CRPs का जो इनकर कर रहे हैं, वो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम में उनको ग्रुप करेंगे. अगर इफ वी एक बार इन दोनों का फॉर्मेट देखें, अगर गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस हैं. अलग अलग हेड्स में जो एक्सपेंसेस हैं वो जो यूनिफाइड बजट एक्सपेंसेस होता है वो ये गवर्नमेंट ग्रांट एक्सपेंसेस आ गया. देन इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट स्कीम्स का एक्सपेंसेस है. स्कीम्स का एक्सपेंसेस फंडेड स्कीम्स हो गया. तो ये आ गया. ये अलग अलग स्कीम्स, ICR फंडेड जो स्कीम्स है उसके जो ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, अमाउंट रिसीव वाला जो है वो रिसीट कॉलम में चला जाएगा. पेमेंट विल बी टेकन टू द पेमेंट साइड ऑफ द मंथली अकाउंट. Then loans and advances. If suppose जो हम लोग ने loans and advances का एग्जांपल लिया था, if someone has taken a loan of say 50,000 under a computer loan, then the initial disbursement of 50,000 as loans and advances will be shown under the payment side under this head, loans and advances head.
Then retirement benefit monthly account में एक अलग उसका head है, which is a part of government grant only. So government grant plus retirement benefit will be say total expenditure under the unified budget. तो यूनिफाइड बजट के एक्सपेंसेस केवल गवर्नमेंट ग्रांट को नहीं पकड़ना है, यू नीड टू इंक्लूड रिटायरमेंट बेनिफिट्स आल्सो, और अदरवाइज इन केस ऑफ मंथली अकाउंट यू कैन जो रिटायरमेंट बेनिफिट का एक्सपेंस है, यू कैन शो इट अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट एंड द बैलेंस ऑफ दैट से annexure B will be taken to government grant. Then जैसे नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांसेस था, तो किसी को सपोज जब पुराना एलटीसी कैश स्कीम या फेस्टिवल एडवांसेस वाला होता था, उस समय किसी को फेस्टिवल एडवांस अगर दिया, जब इनिशियल डिसबर्समेंट ऑफ फेस्टिवल एडवांसेस और इनिशियल डिसबर्समेंट ऑफ दैट एलटीसी कैश स्कीम दैट वाज क्लासिफाइड अंडर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांसेस. देन यू रेमिटेंस में आपको जैसे मैंने बताया कि रिकवरीज मेड अंडर say recoveries made which are to be remitted to some other departments are taken as a due remittance. जैसे किसी को TDS recover किया, तो जो recover की when it is being recovered it is shown as under receipt column. When that recovery is being remitted to the other outside party, it is shown under the payment side. Then there are remittances to headquarters also, जो हम लोग headquarter को अनस्पेंड बैलेंस वापस करते हैं, या जो रेवेन्यू का पैसा होता है उसको वापस करते हैं, that is taken under remittances to headquarter. Then other miscellaneous payment भी है, कुछ और पेमेंट अगर कहीं इनमें क्लासिफाई नहीं हो रही है, जनरली नहीं होगी, तो that will be taken as other miscellaneous receipt. Then the next one is grant lapsed in TSA. With the introduction of TSA, you people might be aware that unspent balance as on 31st March under TSA get lapsed. तो जो lapsed पैसा है वो आप grant lapsed in TSA दिखाएंगे, otherwise that amount will be reflected in your closing balances. तो जो कि नहीं होता closing balance अगर हमारा, क्योंकि उतना पैसा तो lapse कर गया है, that amount is actually not there in your TSA account, जो पैसा lapse हो गया है, so it is better to depict that amount separately as grant lapsed in TSA under the payment side of the monthly account. Then the next and final figure is closing balances, which are the balancing figures. जो opening balances plus receipts during the month थी, उसमें से these 1 to 12 तक के जो serial number के expenses हैं, if we reduce, if we deduct from that opening plus receipt, the figures will of the closing balances of the cash in hand, cash at bank will arrive. तो जो ये balancing figures है, we will get it cross checked with our the cash book. If the things are matching, fine enough, otherwise we need to check out the reasons for the discrepancy की कहाँ हमने कोई expense किया है वो हमने नहीं लिया, या हमने कोई receipt डबल ले ली है या नहीं ली है, तो उसके रीजन को हम लोग ascertain करेंगे. तो इस तरीके से मंथली अकाउंट के टोटल जो दोनों साइड के रिसीट एंड पेमेंट साइड के टोटल मैच होंगे, तो हमारा मंथली अकाउंट बन जाएगा. नाउ कमिंग ओवर टू यूटिलिटी. इसका यूटिलिटी, बेसिक यूटिलिटी क्या है मंथली अकाउंट की? इट्स मंथली रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट. जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक मंथली रिकॉर्ड है रिसीट एंड पेमेंट का. इसमें हम लोग अलग अलग जो मंथ में पैसा रिसीव होता है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. देन it helps in cash in bank balance verification. The figures which our cash book depicts, it needs to be reconciled with the, say, it needs to be cross checked with the figures which we have in our monthly account, because दोनों figures same आनी चाहिए. That helps as a cross check करने के काम आती है कि हमारे दोनों जगह पे figures same है कि नहीं. Now the biggest utility of monthly account is it helps in preparation of annexure G. Those who have helped their say finance officer in preparation of annual account, or maybe their help is sought in preparation of annual account, they must be aware of the fact that की annexure G forms one of the basic document for annual account. ऐसा council में बोलते हैं कि annexure G, if annexure G is prepared, your half work is done. तो annexure G के preparation में it helps a lot. Then it helps in preparation of receipt and payment account and its annexures.
तो जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और उसके अनेक्शर्स होते हैं उसको भी ये बनाने में काम आता है। तो annexure G is one of the annexures for receipt and payment account, but generally annexure G is prepared before and then different schedules of say receipt and payment account is prepared and receipt and account payment is prepared. फिर उसी तरीके से ये जो मंथली अकाउंट है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। जो एनुअल अकाउंट है, बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर एंड रिलेटेड शेड्यूल्स, उसके प्रिपरेशन में भी ये हेल्प करता है। एंड बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। अब मैं भी पुरानी एक इंस्टीट्यूट का एनुअल अकाउंट मेरे पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। आई विल ट्राई टू show you the figures, how the figures travel from one schedule to different schedules and one annexure to other annexure. So basic utility of coming over back to the basic utility of monthly account, ये एक receipt and payment का रिकॉर्ड है हमारा। तो it helps in ascertaining the say total payment made or total receipts made during the month, and then the cash and bank qualification में help करता है ये। annexure G receipt and payment annual account की preparation में भी ये help करता है। इसका main utility यही है। अभी एक annexure G मैं आपको शो करता हूँ। annexure G जैसे इंस्टीट्यूट है उसका annexure, एक इंस्टीट्यूट का annexure G है ये। तो annexure G, इसमें ओपनिंग बैलेंसेस हैं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ से इंस्टीट्यूट इज 38,26,213. So this opening balance will be under this opening balance will be taken as opening balance in your monthly account. Then the receipt during the year under scheme, you have that a particular institute had received this much amount, 6 crore 99 lakh. So this 6.99 figure they will take as receipt under government grant. Now they need to include the receipt under government schemes also. The figure after including scheme is 7 crore 2 lakh 92,000. So ये 7 crore 2 lakh will be taken as under the receipt column of the monthly account. Someone is I hope this page is visible to all of you. नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। Is it visible? No. नहीं सर, annexure G पे ही दिखाई दे रहा है। एक मिनट। हाँ, अब आ गया सर। तो ओपनिंग बैलेंस जिस इंस्टीट्यूट का annexure G है ये, तो इसमें 38,26,000 ओपनिंग बैलेंस है। तो दैट ओपनिंग बैलेंस विल बी टेकन अंडर द ओपनिंग बैलेंस कॉलम ऑफ द रिसीट एंड मंथली अकाउंट। देन जो गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा था वो 7 करोड़ उसको रिसीव हुआ है। 7 crore 2,92,000 that will be taken under the say receipt head of the monthly account. Similarly for IRGS, उनका 12,98,000 का टोटल रिसीट है, that will be taken under different columns of IRGS. Likewise पूरा रिसीट एंड पेमेंट जो है, आप जो भी annexure G बना है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का,
ये कनेक्शन सॉरी मंथली अकाउंट से ही बना है। तो अब मैं एक ना आपको एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ, मे बी एक्सेल फाइल से आप लोग को ज्यादा इजी होगी चीज। सपोज एक इंस्टीट्यूट है, उसका ये मंथली अकाउंट है, दैट्स देयर ओपनिंग बैलेंस, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड है 7 करोड़ 2 lakhs, then other receipts, then IRGS, funded debt. This is what you have prepared on 31st March. Now you have to translate these figures to Annexure G. So how it will say वो opening balance हेड वाइज तो आपके पास रहेगा जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस 38,26,000 था, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मंथली अकाउंट में भी फिगर विल बी सेम। इफ यू कैन सी दैट figure is 38,26,216. Then आपका मंथली अकाउंट में गवर्नमेंट ग्रांट में the institute has received 7 crore 2 lakhs under government grant, which includes schemes also. Now you know that the breakup of this government grant at 35 lakh was 3,50,000 was received under schemes, government schemes, and the rest amount was received under main unified budget. Accordingly आपने annexure G में ये दोनों फिगर्स दिखा दिए, 6 crore 99 lakh and 3,50,000. देन अदर रिसीट, आपको अदर रिसीट की डिटेल्स पता है, तो अदर रिसीट्स आपने IRGS को इंक्लूड करके टोटल अदर रिसीट इज 12,50,000. तो अनेक्शर जी में भी आपने उसको 12,50,000 यहाँ पे इन फिगर्स को करके 12,50,131 ये आपका यहाँ पर भी आ गया। देन मंथली अकाउंट में आपने देखा कि भाई फंडेड डेप्ट इज व्हाट, DPF। तो 39,62,144 की आपने रिकवरी की थी। तो फंड आपके GPF में आपने 39,62,000 रिसीट साइड में एनेक्शर जी में दिखा दिया। देन स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स, IRGS स्कीम, कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का और EMD का मिला के पैसा था 61,73,000। यही देखिए आप यहाँ पर भी डिपॉजिट फंड स्कीम में 61,73,938 मंथली अकाउंट में था। ये सेम फिगर ट्रेवल की है अनेक्शर जी में। एंड इसका सी मंथली अकाउंट में हर एक फिगर का डिपॉजिट फंडेड स्कीम में यू नीड टू प्रिपेयर द डिटेल्स आल्सो एट हाउ मच इज से pertains to deposit schemes, how much pertains to say earmark fund। ये आपको इसमें अलग अलग ब्रेकअप बना के रखना पड़ेगा सो दैट इट हेल्प्स इन स्टडी प्रिपरेशन ऑफ अनेक्शर जी। देन लोन्स एंड एडवांसेस में 48,000 आपने रिसीव किया है एज अ रिकवरी। दैट 48,000 हैज ट्रैवल्ड टू से हियर अंडर इंटरनल रेवेन्यू जनरेटेड लोन्स एंड एडवांसेस रिकवरी एंड पेमेंट्स में 48,000। देन मंथली अकाउंट में फिगर है यू रेमिटेंस की 37,15,561 you have recovered from different say bills towards TDS, NPS, etc. So this will show travel to annexure G under U remittances under here remittances 1. Now coming to the payment side, गवर्नमेंट ग्रांट का पेमेंट अलग है, तो कितना है इसमें आप इस रिटायरमेंट बेनिफिट का अलग से नहीं दिखाया इसमें। तो गवर्नमेंट ग्रांट में 6,91,78,000 का पेमेंट है। तो दिस हैज ट्रैवल टू पेमेंट साइड ऑफ द अनेक्शर जी 6,91,00,000। सिमिलरली फॉर स्कीम्स द पेमेंट इज 3,50,000। मंथली अकाउंट में भी देखिए 3,50,000 है। फंडेड टैक्स में आपका GPF में आपने जो काउंसिल को पैसा वापस भेजा या अदरवाइज आपने से यू हैव सेटल्ड क्लेम्स, फाइनल क्लेम्स और से एडवांसेस और विथड्रॉल्स हुए हैं, दैट अमाउंट इज 40,62,000 एज GPF जो आपने पे किया। तो दैट अमाउंट विल ट्रैवल टू GPF हेड ऑफ द अनेक्शर जी एज हियर। सिमिलरली मंथली अकाउंट में आपने देखा डिपॉजिट फंडेड स्कीम्स में जो आपका आर डिपॉजिट स्कीम्स है उसमें 50,50,000 का यहाँ पे पेमेंट है पूरे 31 मार्च को, दैट हैज ट्रैवल्ड टू अनेक्शर जी ओवर हियर।
This includes say refund also. 50 lakh, 15 lakh, 50,218. Then loans and advances ka you have you have incurred expenses of 16,000 as for fresh loans. तो आपने 16,000 को annexure G में loans and advances column में यहाँ पे 16,000 आपने यहाँ ले गए. Likewise, you remittance भी है, remittances to headquarters भी है, and grant labs in TSA है. These all will from monthly account, these will travel to annexure G and will help in preparation of annexure G to the concerned person, to the odd section. उसके बाद RNP old, RNP new, सारे फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. तो यू कैन, अगर जैसे ये RNP old का है, तो RNP old में गवर्नमेंट ग्रांट 7029. इफ यू चेक फ्रॉम मंथली अकाउंट तो 7029 ये फिगर थी. इट हैज ट्रेवल टू RNP old. सिमिलरली आपकी अदर रिसीट्स जो वहां पे हम लोग मंथली अकाउंट में देख रहे थे, ये है 12,30,000. ये भी आपकी RNP में जाएगी. इसमें आपका पैसा चेंज इसलिए हो रहा है बिकॉज ये IRGS एंड अदर जो रिकवरीज है वो यहाँ पे अलग से आ रही है. तो मोर और लेस इट विल हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बाकी एज यू कैन सी द रिवॉल्विंग फंड स्कीम्स भी है. फंडेड द नेम आर सेम व्हाट वी, इट्स अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये पूरा ईयर का है. मंथली अकाउंट बनता है. तो ऑल द फिगर्स एज ऑन 31st March in monthly account travels to receipt and payment account and helps in preparation of receipt and payment, annexure G and other schedules of the annual account. तो इसी तरीके से RNP न्यू annexure बनता है, RNP न्यू बनता है. तो ये मेरे ख्याल से जो आपकी एनुअल अकाउंट्स की क्लास किसी ने अगर ली होगी तो that person must have dealt in detail. एक मिनट. हाँ, तो ये अलग अलग ड्राफ्ट्स जो मैंने शेयर किए थे आपके annexure G, receipt and payment account, monthly account, I have already shown to all of you. तो ये सारे जो मंथली अकाउंट की फिगर्स हैं that travels to different schedules of the annual account, be it annexure G or receipt and payment, or say the and final annual account of the balance sheet or income and expenditure and other related schedules of the account. तो मंथली अकाउंट का बेसिक यूटिलिटी आपके अकाउंट की वेरासिटी को भी चेक करता है, आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. बस मेरे तरफ से तो इतना ही था. थैंक यू. इन केस आप लोगों का कुछ क्वेरी है तो एनुअल अकाउंट की क्लास मुझे लगता है दास साहब विल टेक अस, मस्ट हैव invited some faculties for who will deal with the annual account chapter also, कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या उसमें checks and balances होते हैं. तो the concerned faculty will take care of that thing. One query is regarding revolving fund. तो revolving fund ICAR ने बहुत पहले एक seed capital देके seed capital amount दिया, and then institute were supposed to use that amount to generate further revenues. अपने revenues को augment करने कैसे वो बढ़ा सकते हैं. तो ये एक तरीके से विद इन इंस्टीट्यूट एक छोटा एक अकाउंट होता है जिसमें रिसीट्स उसी उससे रिसीट सारी आती है उसमें, एंड देन रिलेटेड एक्सपेंसेस जिस उस फंड के जो भी आपका स्कीम ली गई है. जैसे वन रिवॉल्विंग फंड इज मेगा सीड प्रोडक्शन, तो MSP उसमें जब मे बी आई थिंक सम 15 to 20 years बैक वो स्कीम स्टार्ट हुई थी, एंड देन उसमें कुछ सीड कैपिटल सभी इंस्टीट्यूट को दिया गया था, एंड देन इंस्टीट्यूट वर सपोज्ड टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम यूजिंग दैट सीड कैपिटल, एंड देन दैट सीड कैपिटल वाज टू बी डिवाइडेड बैक टू द ICAR हेडक्वार्टर. और फिर जो सीड जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी को प्लॉ बैक करना है प्रोजेक्ट में, एंड फर्दर रेवेन्यू को बढ़ाना है. तो दैट्स काइंड ऑफ हाउ
फंड रिवॉल्व्स, इसीलिए वो रिवॉल्विंग फंड वहां से नाम आया है. What type of question will come in exam? इसमें monthly I have already shared last year question paper to them. From that question they can understand. Last 2 years question on this LD exam, limited departmental examination, that question paper I have already forwarded to them. So therefore, by referring those questions, they can understand what type of question it is coming. So it will not be very lengthy questions, but some question will be coming, and we are also practical session for that also. Apart from this annual account, this monthly account 2 session, specifically we are having a different session only for describing what are the different schedule annexure of the annual account. हाँ, that बिल्कुल that's सब सही कह रहे हैं आप. There may be say 2 marker or 1 marker question on like that ki what is schedule 8 or what does annexure A deals with the annual account या of RNP account, something like that can be say covered in exam. ऐसा कुछ आ सकता है 1 marker 2 marker type questions. I don't think कि full fledged monthly account prepare करने के लिए आएगा. नहीं, monthly full fledged नहीं आएगा, लेकिन इनको आ सकता है from जैसे income and expenditure prepare करो या profit and loss account prepare करो, वो आ सकता है. जैसे 5, 10, 10, 15 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो ट्रेंड है वो देखने से ऐसे क्वेश्चन तो आ रहा है. आ सकता है. आ सकता है. Then क्या क्वेश्चन है sir, any other source of funds to ICAR other than grant in it? Many of the say other agencies, government agencies like DBT, DST are also funding different projects, or say even now private companies are also funding. I know the case of say IRI, that in IRI Tata was funding a project. तो या कोई न्यू हॉलैंड कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, तो these projects may be there, to some private companies project may also be there as a consultancy or contract research project also. Revenue generated is part of consolidated, can be used again for our use. अभी कॉर्पस फंड की गाइडलाइन में भी some शरण कुमार यादव जी हैं, he is asking about can we use revenue generated. So recently council has circulated one guideline regarding corpus fund. So I will suggest you to refer to those guidelines wherein 70% of the revenue generated has been say can be utilized. And उसमें कुछ guidelines में पूरी guidelines for details you refer the guideline. Someone is asking about can you explain about AP cess. तो earlier agriculture produce पे कुछ cess लगता था, जैसे education cess होता है वैसे एक cess agriculture produce पे लगता था. उसकी रिसीट से कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे, एंड उस जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे उसको हम लोग एपी सेस फंडेड प्रोजेक्ट्स बोलते थे. एनीथिंग एल्स? Okay sir, thank you very much. I think in spite of your very busy schedule, you have spare time for the participants, for the better benefit of the participants. So thank you sir. I think so many sessions relating to the annual accounts are there. So your session also will form a part of that session. So thank you sir. Thank you sir. Participant, are you having any question for sir? Sir, for Saurav sir, are you having any question? So no, I think they have already asked in the chat box. So thank you, sir. You can leave, sir. Thank you very much. If today, whatever PPT you are having, you please share with me so that I can be shared to the participants. Now, for the information of the participants, so many times I have told you that you please rename your whatever ID you are using now. You please rename that. Still, people are using Redmi 1, 2, 3, 4, 5, 6. What is that? Once or twice I have told you already. In spite of that, you are not renaming that. You should write your name, designation, institute name. Right? In spite of that, Redmi Pro 1, 2, 3. What is that? You write that. It means from that also we are identifying your ID, no? And one more thing, the schedule, as I told you, due to some unavoidable circumstances, there may be changes in the schedule.
So you should means it may so happen that some of the session you may attend or you may not attend. That way you may be thinking, okay, this session it is not required for attending. Yeah, this session I will attend. You may be thinking that way, but your that perception again will go wrong. Why? Because every day it may so happen that the schedule may the actual session will differ as per the schedule also. It may so happen as you are observing that also. So that is why you have to attend session on day-to-day basis. And every day you have to attend the session. It may so happen that we may go with the original schedule as per the original schedule, or maybe the schedule may change. So, Jem, as you discussed, we have already shared the recording session of the means maybe around 20 up to 20th session we have already shared, and again we will be sharing all the pending session also. And you please pay us attention to all the this whatever your questions we are also assignment I am giving recording we are also uploading at the YouTube, and whatever doubt also you are having you please pay attention, and whatever documents relating to this I am having, so immediately I am forwarding those to you. So any suggestion from your side? We have already covered around more than 50% of the session. We have already covered, and again some more very important sessions are also there, like auditing. Auditing again it is from 100 marks questions I think. So 2-3 sessions from audit will be there, and at least 2 sessions. Auditing will be there. Some of the important sessions are also there. Of course, it may so happen that some sessions may not be so important for your examination point of view, but for the sake of enrichment of the knowledge, you may attend those sessions. So there is no harm for attending any session which is not so relevant for your examination. So you can enrich, you can enhance your knowledge at any point of time. Okay. So this is all about today's session. If you have no questions or no suggestions, so then today's session is closed. Constitution of India. Constitution of India, as you have told, it is not within our syllabus. Still, let me try. Okay. This session, resource persons are not readily available. You may be knowing. Because this session can be delivered by a lawyer or maybe any law students or like that. So let me think, let me explore that. So we may include actually 50 sessions, whatever I have committed for this syllabus only. So if something that session I will have to add means, then some session I will have to either delete or maybe it may be conducted on Saturday like that things. Okay, let me explore, I will tell you. So calculator not allowed for the exam. So what is the problem? You calculate, you see, you take it in other way. Calculators are not allowed. What does it mean? So maybe your question will not be so difficult. Yeah, so calculation is required, or you need to have calculator. You may think in that way also, no? Calculator required means maybe simple questions. Maybe you can calculate by using rough sheet like that. So no problem. Calculator not okay, but you have to thorough for that also. Calculate not allowed, but again once or twice you have to calculate by using rough sheets. Okay. You have to practice that. It is an exam. Okay, what to do? It is the guidelines of council. We have to obey all. Anything? Can you provide topics which you should study for? Now, one session I can arrange. Let me think. Yeah, otherwise, please do not delete any classes. If possible, extra class may be conducted on Saturday. No, we are not going to delete any classes. Whatever committed, that will be done. Irrespective of your attendance, irrespective of your presence in the session, it will be conducted. Okay. Once it has been conducted since more than 1 month, 26 session we have conducted, we have completed today. So whatever be the situation, it will be conducted. Okay.
Exam should be conducted at least 1 month after. That only council can tell. I do have no comments on this. You sufficient time is there. You study at home. Okay. Saturday, Sunday, 2 days. That day I was telling to you, na. 2 days, if you study, na, 20 hours you can study. Per day, 10 hours. You can study. People are studying. You can study. So time is not, I don't think time is constant for you. Even if after your official time also, if you want, okay, morning time it is not possible due to you have to prepare for the office, you have to come. Morning time it is not at all possible. Evening at least 2 to 3 hours you can study if you want. Every day. Every day evening you can go for study for 2 hours at least. Exam date I don't know. Council can tell. Exam, why are you asking exam date? That means you are 100% ready for examination. You go on preparing. It is the time for preparation. Okay, you prepare yourself. Not examination. It may held in the month of October. Maybe. Yeah, maybe after that. I think maybe in the month of October. Okay. Okay, then again, everyone, you please rename your ID, number 1. Number 2, please attend the session. So many people are not attending. I don't know what is the problem. Okay, yeah, maybe 2-3 days holidays were there. That is why they also continued with that holiday. Okay, you attend. Okay, it may not be so useful for your examination, but it is certainly useful for your enhancement of knowledge. Okay, so which cannot be shared. Your knowledge, it is your property. Okay, your intellectual property. No one can take share from that. Your brothers, sisters, friends, no one is going to take share from your knowledge. And once you acquire that, okay, you will be master in that subject. Okay, thank you. Thank you very much. We are closing the today's session. Tomorrow session will be on GFR. Okay, GFR, you please attend the session. It will be held sharply at 4. Okay, thank you.